This is the all-new Realme GT2 Pro smartphone. It is Realme's most premium handset and packs a number of world's first hardware features that make it a very interesting product in the value flagship price bracket. But there are some compromises too. Let's find out everything about the new smartphone in this unboxing and first impressions video. चलिए स्टार्ट करते हैं Realme GT2 Pro की अनबॉक्सिंग। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक वाइट कलर का प्रीमियम बॉक्स और बॉक्स के पीछे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि 50+50 डुअल प्राइमरी कैमरा और यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का आपको चिपसेट मिल जाएगा। पेपर टेक मास्टर डिजाइन जो कि काफ़ी एक यूनिक हाईलाइट फीचर है इस स्मार्टफोन का। 2K आपको डिस्प्ले मिल जाएगी। तो जल्दी से इसको ओपन करते हैं और सबसे पहली चीज़ एक कार्डबोर्ड बॉक्स। इसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर आपको मिलता है सिम कार्ड इजेक्टर टूल और क्विक स्टार्ट गाइड आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आई थिंक एक और चीज़ और यहाँ पर होनी चाहिए। सो दैट्स इट। यहाँ पर आपको एक सेफ्टी गाइड भी मिलती है, तो इसको भी आप ज़रूर रीड कर सकते हैं। सो यही डॉक्यूमेंटेशन आपको बॉक्स में मिलेगा। देन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा Realme GT2 Pro स्मार्टफोन हमारे पास है पेपर वाइट कलर वेरिएंट और ये है वर्ल्ड का फर्स्ट बायो बेस्ड स्मार्टफोन डिज़ाइन, जो कि अपने आप में ही एक हाईलाइट फीचर है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे डिज़ाइन सेक्शन में। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको और क्या फीचर एक्सेसरीज कंपनी प्रोवाइड करती है। बट एक बात मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि ये डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम लग रहा है और आई थिंक ये जो मटेरियल यहाँ पर लगाया गया है ये बहुत यूनिक फिनिश दे रहा है एंड काफ़ी प्रीमियम फिनिश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि ये एक ये एक लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन की आपको पूरी फील देगा। तो अगर आप इस स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं और पेपर वाइट में परचेज करते हैं, एक पेपर ग्रीन कलर वेरिएंट भी है, तो एक आपको एकदम ऐसा लगे कि आप एक स्पेशल एडिशन या लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसको साइड पे रखते हैं एक बार एंड देन वी हैव विद अस एक यहाँ पर आपको डेटा केबल देखने को मिल जाएगी बॉक्स के अंदर एंड दिस इज टाइप A टू टाइप C डेटा केबल। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस डेटा केबल की और साथ में आपको एक केस भी दिया गया है। आई थिंक ये वाइट कलर का होना चाहिए था फॉर दिस पर्टिकुलर कलर वेरिएंट। अगर ये वाइट कलर में होता तो इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता, बट आई थिंक अभी भी ये कॉन्ट्रास्ट सेट करेगा ये अगर मैं यहाँ पर इसको प्लेस करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको ये बॉक्स के अंदर वाला जो केस है वो अगर आप स्मार्टफोन के साथ यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा जो कि बुरा नहीं लग रहा। आई थिंक दिस लुक्स प्रिटी गुड एंड क्वालिटी केस की अच्छी है। सॉफ्ट रबर मटेरियल यहाँ पर आपको दिया गया है और ये जो केस है ये आई थिंक जो टिपिकल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस आते हैं उनसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये येलो भी नहीं पड़ेगा विथ टाइम एंड आई थिंक काफ़ी ठीक ठाक केस दिया है कंपनी ने यहाँ पर। वन प्लस स्मार्टफोन के साथ जो OnePlus 10 Pro है उसके साथ भी आपको यही वाला ऐसा ही केस कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक सुपर डार्ट का चार्जर दिया गया है और इतना भारी तो नहीं है। आई थिंक जो Realme का हमने ऑलरेडी चार्जर देखा हुआ है वैसा ही आपको यहाँ पर एक कंपनी यहाँ पर चार्जर प्रोवाइड करती है। सो ये बॉक्स में आपको यही एक्सेसरीज मिलेंगी। एक और चीज़ यहाँ पर आई थिंक नहीं। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट यू गेट इन द बॉक्स। कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर हमारा पूरा एक्सेसरीज का सेटअप। तो ये सब कुछ आपको बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ़ोन के फीचर्स के बारे में। स्टार्ट करेंगे फ़ोन के डिज़ाइन से। This is indeed a premium looking phone and gives limited edition vibes. The GT2 Pro has world's first bio-based smartphone construction and as per Realme, it is an environmental friendly design as the manufacturing process for this particular type of back material produces 35% less carbon emissions. And once again, this design is created by the famous Japanese industrial designer Naoto Fukasawa, who helped designing the Onion and Garlic Edition Realme X Master Edition phones. This is a big phone but doesn't come across as a very bulky handset. The ergonomics are just fine and you can use it with one hand. Sadly, there's no official IP rating on a smartphone which is touted as the brand's most premium handset. It's just disappointing. You can buy the Realme GT2 Pro in 3 color variants: paper white, paper black and steel black. Similar to the design, there's another world's first in the display department. As Realme mentions, the phone has world's first 2K AMOLED flat display with LTPO 2.0 technology. This LTPO technology enhances some battery life as it makes the screen more power efficient.
It's a 6.7 inches 10-bit Quad HD Plus display with 100% P3 color gamut support, 1400 nits peak brightness, and is protected by a layer of Corning Gorilla Glass Victus. The Quad HD Plus panel has an adaptive refresh rate of 120Hz and 1000Hz touch sampling rate for smooth gameplay. Overall, this is an excellent display and should make the viewing experience top class. The Realme GT2 Pro has a rather interesting camera setup. There's a 50 megapixel primary camera with OIS and EIS supported by a 50 megapixel wide angle lens offering a 150-degree field of view along with a dedicated fisheye mode. There's no portrait or telephoto sensor, but you do get a very unique 40x micro lens that allows you to capture some interesting macro pictures. We took some camera samples and found some promising results. The pictures come out crisp and the dynamic range is excellent. The More section gives you access to a host of exciting features that can help you make the most out of this interesting camera setup. Let's check out some camera samples. Coming on to the hardware and software, the GT2 Pro is also powered by the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset, the same processor that supplies power to the OnePlus 10 Pro, Galaxy S20 Plus, Galaxy S22 Ultra, and the iQOO 9 Pro smartphone. It is based on 4nm fabrication technology and is supported by a 4th generation Adreno GPU. To handle heat signatures, Realme has added a stainless steel vapor cooling chamber. The smartphone runs on Realme UI 3.0 based on Android 12. The Realme UI is very responsive and packs a fair share of utilities to enhance your day-to-day experience. The smart sidebar is our favorite one. You also get some quick launch features, smooth gesture controls, kid space, flexible windows, and a fair share of bloatware. Thankfully, you can uninstall these preloaded applications. More on the hardware and software performance in our detailed review of the smartphone. Similar to the OnePlus 10 Pro, the Realme GT2 Pro is also powered by a bigger 5000 mAh battery cell. But unlike the 80 watt fast charging support on the OnePlus 10 Pro, the Realme GT2 Pro gets 65 watt fast charging. This isn't the best fast charging technology in the market but should offer satisfactory results. Connectivity also gets some world's first. The GT2 Pro claims to feature the world's first ultra-wideband hyper-smart antenna switching technology. The phone has 12 antennas on the edges and it can smartly select any particular antenna to deliver the best possible coverage. We will test this feature while playing games on the smartphone in our comprehensive review. So overall, the GT2 Pro seems to be justifying Realme's most premium handset title. The phone brings a unique environmental friendly design, a gorgeous 120Hz Quad HD Plus flat AMOLED display, and packs the latest hardware with a unique camera setup. How much of this will translate into a solid real life performance? Find this out in our detailed review and don't forget to subscribe Gizbot YouTube channel.